Namaste. I welcome you all in our today's live discussion on other financial services unit 26.7 of our subject retail banking and wealth management. जैसे हम कंटिन्यूस बेसिस पे इस यूनिट पे मैराथन सेशन ले रहे हैं, उससे आपको पता चल गया होगा कि हाउ मच दिस important topic is. This topic is very important from examination point of view as well as from your banking knowledge point of view also. So इसीलिए जिन्होंने अभी तक हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पुराने हमारे जो डिस्कशंस हो उसमें जरूर देख लीजिए ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिफोर इनिशिएटिंग आवर डिस्कशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे आप सभी को अवगत है, हम जेआईबी और सीआईबी के डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए। साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो सीआईबी एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं, उन्हीं को भी ये मैसेज कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। Today's discussion we will concentrate on wealth management. What कल हमने PMS देखा था, आज हम wealth management देख लेंगे। What is the situation of wealth management? Wealth management industry is largely dominated in India by ICICI Bank, HDFC Bank, and Kotak Bank, top three players, and HSBC and Standard Chartered are also making their presence felt not only through the geographical expansion but also by improving products and technologies. अगर हम इसको देखते हैं तो we can say that private sector banks and foreign banks are dominating this type of activity या this pair of business. Private sector banks में ICICI Bank is leading. ICICI Bank, HDFC Bank and Kotak banks are playing the key role. साथ साथ फॉरेन बैंक्स में HSBC and Standard Chartered banks are also contributing equally for development of wealth management business in the country. इसके कस्टमर को क्या क्या एडवांटेजेस होंगे? जब कस्टमर को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस मिल जाती है, वो उनको अपना टैक्स प्लानिंग करने में हेल्प हो सकती है, बिकॉज वॉट एवर में विद द हेल्प वेल्थ मैनेजमेंट दैट वेल्थ दे हैव, they can do effective tax planning so that they can save their money and ultimately which will help them to improve their wealth in future. It is helpful in selection of investment strategy because wealth managers or wealth management is a professional team. So because of their professional knowledge, we can manage our wealth in an effective manner. So this is helpful in selection of investment strategy. साथ साथ स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी उनका काफी अहम रोल रहता है। दे प्ले बेटर रोल इन स्टेट मैनेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल and forward planning. Once they come to know what is the goal of an individual, जो इन्वेस्टर है उनका गोल क्या है, कितना समय उनके पास अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली दे मैनेज द वेल्थ सो दैट जो कस्टमर जो इन्वेस्टर है वो अपना गोल ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड अचीव कर सकते हैं। The wealth management industry in India is set to grow substantially, benefiting from favorable market condition and anticipated regulatory support. This is just for your information. Now we are going to see one important and new topic for discussion, that is factoring. Many of us might not be aware about this concept. It's a good concept. One should understand it because it's a developing concept in our country. It is a financial option for management of receivables. What is the meaning of receivables? Receivable means कंपनी के बुक्स में जो डेटर्स है, डेटर्स आर द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव। जो कंपनी के बुक्स में रिसीवेबल्स है, कंपनी को जो पैसा उनके उन्होंने जिनको माल बेचा होगा उनसे आना बाकी है, दैट इज नोन एज अ रिसीवेबल्स। तो कंपनी के जो रिसीवेबल्स है, इट मीन्स कंपनी का उतना पैसा ब्लॉक हो गया है, उसको हम किस तरह से प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द फैक्टरिंग। सो इट इज अ फाइनेंशियल ऑप्शन for management of receivables. In factoring,
ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको फैक्टर करके जाना चाहता है, फैक्टर बाइज द अकाउंट रिसीवेबल्स ऑफ ए कंपनी एंड pays of the amount after retaining the margin immediately on agreement. So मान लो कोई कंपनी के 50,000 रुपए के या 50 लाख रुपए के रिसीवेबल्स बाकी है। इट मीन्स जो उनके उनके जो कस्टमर्स है उनसे उनको 50 लाख रुपया आना बाकी है, एंड दैट विल कम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज पर देयर एग्रीमेंट। तो तब तक कंपनी के 50 लाख रुपए ब्लॉक हो गए। इन दिस केस व्हाट फैक्टर विल डू, by making the agreement with the company, factor will purchase that receivables, and by keeping some margin, balance amount जो है वो कंपनी को दे देंगे। So what is the advantage for the company? जो रिसीवेबल्स उनको बाद में मिलने वाले थे वो उनको एडवांस में मिल गए, सो दे कैन मेक द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। एंड देन जब भी वो कंपनी के रिसीवेबल से, कंपनी के जो डेटर से जब वो लोग अपने पैसे पे करेंगे, फैक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उससे अपना लोन जो उन्होंने कंपनी को दिया होगा वो एडजस्ट करेंगे, and balance amount they will pay it back to the company. So financial in a factoring, a financial institution buys the account receivable of a company and pays the amount after returning the margin immediately on agreement. Factor pays the margin portion to the client once the customer pays the debt. Either the factor or client, depending upon the type of factoring, does collection of debt from the customer. तो जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो जैसे जैसे ऑन ड्यू डेट उनके पेमेंट करते जाएंगे, उसी हिसाब से दे विल मेक द पेमेंट टू द फैक्टर, एंड विद दैट मनी फैक्टर अपना लोन एडजस्ट करेंगे, एंड जो बचा हुआ पैसा होगा बैलेंस अमाउंट अगर कोई है दैट दे विल पे टू द देयर क्लाइंट और टू द कंपनी। साथ साथ कंपनी के जो कस्टमर हैं उनसे फंड्स रिकवर करने की जिम्मेवारी आइदर बैंक मींस आइदर फैक्टर ले लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लेती है, या कंपनी लेती है एज पर द एग्रीमेंट अंडरटेकन बाय देम। Scope for factoring services in India. This factoring service is very much useful for MSME industries. So factoring is one of the upcoming source of finance for SMEs in India. A major challenge faced by micro, small and medium enterprises, that is MSMEs, is insufficient finance, especially for working capital. MSMEs को ज्यादा working capital की requirement रहती है, but they find it very difficult to raise the sufficient working capital finance from the banks. In that case, unko factor is very much helpful to them because they are converting their receivables into cash immediately because with the help of the factor, and they can they can make the better use of the money that they have. Quick conversion of trade receivables into cash is a crucial for MSME to maintain liquidity and sustain their business, जो हमने अभी डिस्कशन किया है। फैक्टरिंग इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू कैश। हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये डिस्कस किया था इन आवर इनिशियल डिस्कशंस कि जब कंपनी के रिसीवेबल्स कैश में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज द की फैक्टर फॉर द कंपनी। तो ये जो की फैक्टर है, फैक्टर्स इन दैट केस फैक्टर्स कंपनी को हेल्प करते हैं। फैक्टर्स कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसको कैश देके दे कन्वर्ट इट इनटू कैश, जो एमएसएमईज को अपना लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। In view of this, there is a need to establish an effective institutional infrastructure to facilitate efficient and affordable factoring process while ensuring ample liquidity for all involved parties through a vibrant secondary market. Now, what are the guidelines? RBI guidelines क्या है factoring के बारे में? What are the guidelines? What are the RBI guidelines for this factoring activity or factoring services? As per RBI guidelines,
फैक्टरिंग बिजनेस थ्रू ए सब्सिडरी, अगर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टरिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको दे कैनॉट डू इट डिपार्टमेंटली, बट उनको उसके लिए सब्सिडरी फॉर्म करनी पड़ेगी। एंड अगर सब्सिडरी फॉर्म करते हैं, इन दैट केस द एग्रीगेट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन फैक्टरिंग सब्सिडरीज and factoring companies shall not exceed 10% of the bank's paid up capital and reserve। अगर बैंक कोई सब्सिडरी सेटअप करना चाहती है फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग से फैक्टरिंग सर्विस, इन दैट केस बैंक का अपना जो पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व्स है उससे 10% से ज्यादा अमाउंट वो फैक्टरिंग सब्सिडरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय आरबीआई on the banks and financial institutions for setting up a factoring subsidiary। The factoring business departmentally shall be subject to the following conditions। एंड अगर कोई भी बैंक अपना इंटरनली थ्रू डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंटली अगर फैक्टरिंग बिजनेस करना चाहते हैं, इन दैट केस फैक्टरिंग factoring services shall be provided with recourse or without recourse or on limited recourse basis। Yeah, it means in any way they can function, because they can function with recourse, they can function without recourse, they can function on limited recourse, all types of factoring services they can do on, means all types of, they can do it, all types of recourses are available for the banks in this case। A thorough credit appraisal of the debtor shall be carried out by the banks before entering into any factoring arrangement, and it shall be extended for genuine trade transactions। जब बैंक कोई भी यूनिट के साथ, कोई भी कंपनी के साथ अगर फैक्टरिंग अरेंजमेंट करना चाहती है तो उसके पहले उस कंपनी की जो डेटर्स की लिस्ट है, जो रिसीवेबल्स की लिस्ट है, उसको वो थरोली अंडरस्टैंड करेंगे, थरोली अप्रेज करेंगे एंड ये देख लेंगे कि जो डेटर्स एग्जिस्टिंग है, जो रिसीवेबल्स के अगेंस्ट बैंक फैक्टरिंग सर्विस देना चाहती है, वो रिसीवेबल्स ट्रेड जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, जेन्युइन ट्रेड रिसीवेबल्स होने चाहिए। The bank has to take that much care while undertaking the factoring services। And to avoid double financing, banks and factors shall have a mechanism for sharing information about the common borrowers। तो जिस फैक्टर्स के लिए, जिस बोरोर्स के जिस रिसीवेबल के अगेंस्ट बैंक फैक्टरिंग कर रही है, उसके वो पार्टी उन रिसीवेबल्स के अगेंस्ट दूसरे बैंक से फाइनेंस ले ले। डबल फाइनेंसिंग अवॉइड करने के लिए बैंक्स एंड फैक्टर्स आपस में ठीक तरह से कोऑर्डिनेट करे, इस तरह से मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करे कि उनका आपस में रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता रहेगा, रेगुलर बेसिस पे वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, ताकि कस्टमर एक ही रिसीवेबल के ऊपर दो तरफ से फाइनेंस नहीं ले सके। Credit information regarding the non-payment of dues by the person on whom exposure was booked shall be furnished to the credit information companies authorized by RBI। एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी प्रोवाइड करते रहेंगे, सो दैट दे कैन अपडेटेड द रिकॉर्ड। अगर उसमें कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो उसके बारे में भी बाकी लेंडर्स को आइडिया मिल जाएगी। So these are the things that you have to keep it in mind if any company, if any bank starts to do the business internally or departmentally. What are these conditions? We will have a relook at it। Factoring services shall be provided। Bank factoring service either with recourse, without recourse और limited recourse basis पे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती है। जो डेटर्स के अगेंस्ट, जो रिसीवेबल के अगेंस्ट फैक्टरिंग अरेंजमेंट करना चाहती है, उसका थरो एनालिसिस करना जरूरी है, उनका थरो अप्रेजल करना जरूरी है। साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो रिसीवेबल्स हैं दे आर जेन्युइन ट्रेड रिसीवेबल। डबल फाइनेंसिंग अवॉइड करने के लिए बैंक्स एंड फैक्टर्स आपस में एक मैकेनिज्म डेवलप करें कि उसके थ्रू वो रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगी, ताकि पार्टी जो है, कस्टमर जो है, वो सेम रिसीवेबल के अगेंस्ट डबल फाइनेंसिंग ना रिस्क करें।
एंड अगर कोई पर्सन जिसके ऊपर हमने एक्सपोजर लिया हुआ है, जो रिसीवेबल से अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनके बारे में इमीडिएटली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को इंटीमेट किया जाए ताकि वो भी अपना रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली अपडेट करें। अदर एजेंसी बिजनेस बाय बैंक, तो जैसे हमने अभी तक काफी बिजनेस देखे हैं, म्यूचुअल फंड बिजनेस हमने देखा, इंश्योरेंस बिजनेस देखा, डिपॉजिटरी देखा, फैक्टरिंग भी देखा। In addition to that, there are certain agency businesses which are carried out by the bank. And one of the important business is sale of sovereign gold bond. This year, there are less number of trenches that have been done during the year. Like in previous year, there were good number of trenches launched by RBI for sale of sovereign gold bonds. So sovereign gold bonds are government securities issued by the RBI on behalf of the government of India, having a tenure of 8 years. जब गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेचती है, मींस आरबीआई इज सेलिंग द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स on behalf of the government. So banks are doing the agency arrangement. Banks are undertaking the agency for sale of that bonds. What is the tenure of that bonds? Tenure of that bonds is 8 years. Normally, the tenure of the sovereign gold bonds is 8 years. You have to keep it in mind. They offer an alternative to holding physical gold, with investors paying the issue price in cash and receiving redemption in cash upon maturity. Why sovereign gold bonds are important? लोगों को घर में फिजिकल कैश गोल्ड रखने के में जो रिस्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेफ्टी है, इसको अवॉइड करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर बेटर ऑप्शन। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में पीपल विल परचेज द गोल्ड एट द प्रिवेलिंग प्राइस, एंड वेन एवर द बॉन्ड्स गेट मैच्योर, और जब वो एनकैश करेंगे उस दिन के उस टाइम में जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट होगा, उतने अमाउंट की कैश उनको वापस मिल जाएगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। दे कैन होल्ड द गोल्ड, they can sell the gold at the prevalent price without and having full security without risk. This is available. These bonds bear interest at the rate of 2.5% fixed rate per annum on the amount of initial investment paid in half yearly rates, and the last interest will be paid on maturity along with the principal. तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर 2.5% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, एंड इंटरेस्ट पेड इज ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, एंड लास्ट इंटरेस्ट जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट के साथ पे किया जाता है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। The bonds are held in the books of RBI because since RBI is issuing the bonds, bonds are held in the books of the RBI or in demat form, eliminating the risk of loss of script, etc. डिमैट के लिए कल ही हमने डिस्कस किया था। एलिजिबल इन्वेस्टर्स, अभी गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? एनी इंडिविजुअल, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। एनी इंडिविजुअल, HUFs, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। इट मीन्स इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, HUFs कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकती है, यूनिवर्सिटीज कर सकती है, चैरिटेबल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन यू कीप इट इन माइंड ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। A minor can also invest in sovereign gold bond through their guardian, and nomination facility is also available. This is the additional feature of this bond. अगर कोई माइनर के नाम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, माइनर के नाम पे अगर गोल्ड बॉन्ड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो दे कैन डू इट अंडर द गार्डियनशिप अरेंजमेंट, एंड गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। लेकिन कोई भी व्यक्ति कम से कम कितना गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द अपर सीलिंग? ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट शैल बी 1 ग्राम with the maximum limit subscription of rupees 4 kg for individuals and HUF, and 20 kg for trust and similar notified entities per fiscal year. This is very important क्योंकि एक साल में
4 ट्रेंचेस में भी हो सकता है, मीन्स एक साल में 4 बार भी बॉन्ड इशू हो सकते हैं, एक साल में 12 बार भी, हर महीने वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, या एक महीने में एक ही बार बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो पूरे साल में मिलके वन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट, मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 ग्राम फॉर एवरीबडी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए 4 किलो पर के ईयर फाइनेंशियल ईयर है। एंड फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर नोटिफाइड एंटिटीज जो है, जो एंटिटीज गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर नोन एज द नोटिफाइड एंटिटीज। ट्रस्ट एंड वो नोटिफाइड एंटिटीज ज्यादा से ज्यादा पर फाइनेंशियल ईयर में 20 ग्राम तक का गोल्ड परचेज कर सकती है, या 20 ग्राम, 20 किलोग्राम, नॉट ग्राम, 20 किलोग्राम का गोल्ड परचेज कर सकती है, या 20 किलोग्राम के गोल्ड की वैल्यू में इन्वेस्ट कर सकती है। हाँ, लेकिन ये गोल्ड की वैल्यू किस तरह से डिराइव की जाएगी? हाउ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ द गोल्ड? गोल्ड बॉन्ड जब इशू करते हैं, तब गोल्ड की वैल्यू 3 दिन प्रियोर टू द इशू ऑफ द गोल्ड बॉन्ड जो आते हैं, उसका 999 कैरेट का जो गोल्ड होगा, उनका 3 दिन की एवरेज, सिंपल एवरेज के हिसाब से जो प्राइस आती है, उस तरह से गोल्ड की प्राइस फॉर इशू ऑफ बॉन्ड्स डिसाइड की जाती है। एक नाउ वी विल सी द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द गोल्ड बॉन्ड शैल बी इन इंडियन रुपीज, फिक्स on the basis of the simple average of closing price of gold of 999 purity, published by India Bullion and Jewelers Association of India for the last 3 business days of the week preceding the subscription period। जो पिछले हफ्ते के जो लास्ट 3 वर्किंग डेज का जो 999 प्योरिटी का जो पर डे क्लोजिंग प्राइस होगा, उनका सिंपल एवरेज निकाल के जो वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी द 1 ग्राम वैल्यू ऑफ द गोल्ड बॉन्ड दैट हैज बीन इशूड। Premature redemption of the bond is permitted from the 5th year of the date of issue on an interest payment date। Again, this is very important term। तो टोटल टेन्योर ऑफ बॉन्ड हमने कितना देखा था? टोटल टेन्योर इज फॉर 8 इयर्स। लेकिन अगर किसी को प्रीमेच्योर रिडम्पशन करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो वो 5 साल के बाद प्रीमेच्योर रिडम्पशन कर सकते हैं, लेकिन ऑन नॉट ऑन एनी डेट। जिस दिन इंटरेस्ट पेमेंट डेट होगा, उसी दिन उसका प्रीमेच्योर रिडम्पशन भी किया जाएगा। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कीप इट इन माइंड। The bonds are tradable from the date notified by RBI। The only bonds held in demand form with depositories can be traded on stock exchange। अगर आप फिजिकल बॉन्ड्स परचेस करेंगे, तो आप उस बॉन्ड्स के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स डिपॉजिटरी में या डी ई फॉर्म में अगर परचेस करते हैं, या थ्रू योर डिपॉजिटरी अकाउंट अगर आप बॉन्ड्स आप परचेस करते हो, तो उस बॉन्ड्स को आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, उस बॉन्ड्स को आप स्टॉक एक्सचेंज में एक्सचेंज कर सकते हो। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति फिजिकल बॉन्ड्स परचेस करेंगे, फिजिकल टाइप ऑफ बॉन्ड्स परचेस करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सेल देयर बॉन्ड्स through stock exchange, but they can take the premature payment on interest payment days। अभी तक हमने गोल्ड बॉन्ड के बारे में काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट था पूरा डिटेल समझ लिया। नाउ वी विल गो फॉर दी वन मोर स्कीम दैट इज नोन एज अटल पेंशन योजना। सर स्टॉक मार्केट में गोल्ड बॉन्ड को सेल और बाई कर सकते हैं क्या? हाँ, या कर सा इफ इट इज इन डिपॉजिटरी फॉर्मेट, इफ इट इज इन ई फॉर्म। ये देखिए, the bonds are tradable from a date notified by RBI। Okay, the only bonds held in demand form with depositories can be traded on stock exchange। अगर आप फिजिकल बॉन्ड परचेस करते हो, तो आप उसको ट्रेड नहीं करेंगे, उसके लिए पहले आपको डिमैट फॉर्म में लेना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्रेड इट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन आपके पास अगर फिजिकल बॉन्ड है, तो आप इसको प्रीमेच्योर रिडम्पशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इज वेरी पॉपुलर फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या दोज पीपल हु हैव लो इनकम ग्रुप। इसमें
जो बैंक के पास अकाउंट रखते हैं जिनका एज 18 से 40 साल के बीच में है, दे हैव टू पे एवरी ईयर द मिनिमम अमाउंट, एंड जो अमाउंट वो पे करेंगे आफ्टर 60, उनको रेगुलर पेंशन उससे मिल जाता है। तो इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर those who wish to have a regular income after the age of 60. Now, what is the eligibility for joining of APY? APY का मतलब अटल पेंशन योजना। APY is open to all citizens of India. First thing that हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना पड़ेगा, APY is open to all citizens of India who have a saving bank account. सेविंग बैंक होना मैंडेटरी कंडीशन है, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ अकाउंट। APY is open to all citizens of India who have a saving bank account. And the minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. आप अगर मीन्स अगर अकाउंट होल्डर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर अगर 40 साल से नीचे एज है उनका, 18 से ज्यादा एंड 40 साल के नीचे, इस गैप में जिनका भी एज है, दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन अंडर अटल पेंशन योजना। What are its future? APY is a voluntary, it is a voluntary scheme, periodic contribution based, periodic contribution based pension system wherein pension is guaranteed. Minimum pension कितना है? 1000 rupees and maximum is rupees 5000 after the age of 60 years until death and to spouse after his death. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अटल पेंशन योजना? एक तो ये वॉलंटरी स्कीम है, नॉट कंपलसरी। जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है, जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच में है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बार बार ये आपसे डिस्कस इसीलिए करता हूं कि आपके ये चीजें सब ध्यान में रह जाएगी। वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड उनके अकाउंट से पीरियोडिक जो भी प्रीमियम होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, वो रिकवर किया जाएगा टिल द एज दे अचीव द 60। एंड उसके बाद जो प्रीमियम है उसके थ्रू उनको मिनिमम 1000 रुपए तक पेंशन मिल सकता है एंड मैक्सिमम 5000 पर मंथ तक पेंशन मिल सकता है। एंड जब तक अकाउंट होल्डर अलाइव है तब तक उनको मिलेगा, एंड आफ्टर हिज डेथ जो उनकी स्पाउस होगी उनको पेंशन मिलेगी। तो दिस इज वन ऑफ द गुड स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। आफ्टर डेथ ऑफ बोथ ऑफ देम, मान लो अकाउंट होल्डर का भी डेथ हो गया, उनके स्पाउस का भी डेथ हो गया, आफ्टर दैट व्हाट विल बी द what they can do with the funds that has been paid by the depositor? After death of both of them, the nominee shall be entitled to receive the pension wealth accumulated till the age of 60 of the subscriber. तो अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया, उनके स्पाउस का भी डेथ हो गया, तो जो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटर ने टिल द एज ऑफ 60 किया था, उसका जो वेल्थ वैल्यू जो है वो अमाउंट नॉमिनी को दी जाएगी। इट मीन्स आप आज जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते जाएंगे हर साल, उससे आपको पेंशन मिलेगा। आपके डेथ के बाद स्पाउस को पेंशन मिलेगा। स्पाउस के डेथ के बाद को जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है उसकी जो वेल्थ वैल्यू है वो अमाउंट नॉमिनी को दी जाएगी। Exit withdrawal and pension payment. On completion of 60 years, the subscriber will get guaranteed minimum monthly pension or higher monthly pension depending on the investment return. तो जो प्रीमियम हम करते हैं उससे मिनिमम पेंशन आपको एश्योर्ड किया जाता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, उम्मीद करता हूं कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स के थ्रू आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर के साथ कंफर्टेबल हो तो आप उसका जवाब जरूर दें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। What are the advantages of customers in wealth management? वेल्थ मैनेजमेंट में कस्टमर के क्या क्या एडवांटेजेस कस्टमर को मिलते हैं? टैक्स प्लानिंग, स्टेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिलेक्शन एंड बैकवर्ड प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, स्टेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिलेक्शन तीनों सेम है, एंड फॉरवर्ड प्लानिंग।
Tax deduction, this is not correct because we already seen that tax planning is there. So C is not correct. Tax deduction, D is not correct. लेकिन because of the wealth management हम forward planning कर सकते हैं, backward planning नहीं कर सकते. So B is the correct answer for our question. What is factoring in the financial context? Financial context के means financial terms में factoring का मतलब क्या है? Buying and selling of securities, buying and selling of goods, management of receivables and management of payables. हमने already discuss किया. Factoring means nothing but the management of receivables or conversion of receivables into cash at an earliest possible time. So C is the correct answer for our question. Rakesh Prakash ji, good to see you. Please continue. Raman ji, good to see you. Please continue your efforts. It is good to see. According to RBI guidelines on factoring service, as per RBI guidelines, what is the maximum aggregate equity investment allowed in factoring subsidiaries and companies by banks? अगर बैंक फैक्टरिंग सर्विस करना चाहती है बाय सेटिंग अप ऑफ सब्सिडरी, वो मैक्सिमम कितना अमाउंट कितनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कर सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीमेंट इक्विटी, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट? हमने ऑलरेडी देखा था B, कि या 10% of 10%. बैंक का जो अपने पे अपना खुद का पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व्स है, उससे 10% से ज्यादा अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसका नॉर्मली टेन्योर कितना रहता है? 5 years, 8 years, 10 years एंड 15 years. तो उनका जो नॉर्मल टेन्योर है, तो टेन्योर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज ऑफ 8 years and they can do the premature payment after 5 years. So B is the correct answer for this question. तो जैसे फैक्टरिंग हो, इसके बारे में हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक या दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह से आप पूरा जो हमने डिस्कशन किया, प्लीज ट्राई टू कीप इट इन माइंड. सो वॉट एवर मे बी द क्वेश्चन एंड इन वॉट एवर फॉर्म दे आस्क, you will be able to reply if your concepts are clear. What is the eligibility criteria for joining the Atal Pension Yojana? अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एज इज 20 years, मैक्सिमम एज इज 60 years, मिनिमम एज इज 18 years, मैक्सिमम एज इज 50 years, मिनिमम एज इज 18 years, मैक्सिमम एज इज 40 years, मिनिमम एज इज 25 years, मैक्सिमम एज इज 55. जैसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अगर आपको मीन्स अगर किसी को भी एपीवाई ज्वाइन करना है तो उसके लिए मिनिमम एज शुड बी 18 years and maximum age should be 40 years. So C C, is the correct. 18 Yeah, years and maximum age is of 40 years. yeah. C is the correct answer for this question. वर्मा जी, गुड टू सी यू ऑल्सो. प्लीज आप कंटिन्यू कर दीजिए. दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जाम ऑल्सो. व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? जो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इज 2.5% per annum. So C is again the correct answer, and this interest is a tax-free interest also. That also you have to keep it in mind. C is our correct answer. Now we will go for true and false. Factoring involves a financial institution selling the accounts receivable of a company to the client is not a correct statement. Company is selling its receivable to the financial institution. Factoring involves financial institution purchasing the accounts receivable of a company. So our answer is false.
Factoring, financial institution buys, purchases the account receivables of a company to and pay the amount after retaining the margin immediately on agreement. Next, factoring services are primarily aimed at large corporations rather than SMEs in India. No, this is not the correct statement. हमने already discuss किया हुआ है. In India, SMEs or MSMEs are finding it difficult to get suitable finance, sufficient finance for their working capital business. So it is suitable for factoring compared to other large companies. So this, our answer is not true, false, and correct statement is factoring is one of the upcoming source of finance for SMEs in India. Sale of sovereign gold bonds offers an alternative to holding physical goods. Yes, this is the correct statement. Atal Pension Yojana is open to all citizens aged 18 to, no need for me to say, हमने काफी बार डिस्कस किया है. It is Atal Pension Yojana is open to all citizens of India aged 18 to 40 years. तो आज तक हमने जो अभी डिस्कशन किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो हमने डिस्कशन किया है अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन because this will be a motivating factor for me. This will motivate me. You are प्रेसिंग ऑफ दिस लाइक बटन. ये जो आपकी एक्टिविटी है, यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड्स एंड कलीग, ताकि आपके साथ वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं. इसी के साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू इट इमीडिएटली, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे एंड उससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं करेंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो प्लीज सेंड योर क्वेरी थ्रू कमेंट बॉक्स और ऑन दिस मेल आईडी. वी कैन रिस्पॉन्ड इट इमीडिएटली. So with this, we will conclude our discussion for a day. Before that, मैं आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि हमने हमारे चैनल पे हमारे ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलग अलग चैप्टर के वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए. ऑलरेडी हमने डिस्कशंस कंडक्ट किए थे. जिन्होंने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होगा या अभी तक उन्होंने वो प्रैक्टिस वीडियोस नहीं देखे होंगे, आप उन वीडियोस में देख लीजिए, ताकि आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी. उससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो सकता है. With this, I wish you all the best and thank you very much.